Okay, so we started S3 yesterday. So what is S3? S3 is a place where we'll store our data. Okay, S3 is object storage. Okay, the data is stored in multiple devices. You can store up to 5 terabyte of a single file. There is unlimited space. We have to create a bucket to store the data. Whenever we upload our data in S3, we'll get 200 status code to command line. We have covered all this thing. We also seen that Amazon give a guarantee of 99.9 availability and 99.99999 durability. Anybody has any question till here? We have covered this thing yesterday. Okay. Now you can store any type of data. Means there is no format that S3 doesn't support. You can upload text, you can upload PPT, you can upload MP3 files, you can upload MP4 files. You can store any type of data. It's a pure storage. Lifecycle management. What is lifecycle management? Just like human have a life cycle, right? Everything has a life cycle. We get born, then childhood, then adulthood, then mid age, old age, and we die. This is a life cycle of a human. Same thing is a life cycle of our data. Okay, same thing goes with life cycle of a data. Okay, so what is the life cycle of a data? Data is generated, data is been used, data is been archived, and then data is get deleted. So we can enable the life cycle on the data which we are uploading. Okay, and S3 support that. How can we do the life cycle? We'll see in the lab. Then versioning. What is versioning? Anybody knows what is versioning? What is life versioning? So my versioning is basically if you are in your college, you might have created a version of a file. जब भी let's take example, when you create a project, I think everybody in the college have created a project. हम क्या करते हैं जब प्रोजेक्ट बनाते हैं? प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं, let's say project 1, and we give a version like project 1, project 2, final, पक्का वाला final, final, right? We create a version of a file, right? So what is versioning? Versioning basically keeping the existing data, and if you're creating a new, adding new thing, keep both the data, old data as well as new data, right, of a single same file. That is a versioning. मतलब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, एक पॉइंट तक आपने सेव कर दिया, तो उसका आपने एक बैकअप ले लिया, उसके आगे एक और नया फाइल बना रहे हो. Okay, that's a versioning. That is also supported in S3. How it is done, we will see in the lab. It supported encryption. What is encryption? Anybody? What is encryption? In general, Data, the data which is stored, it is encrypted with some kind of keys, or so that it is not easily accessible or accessible to those person whom we have given an access okay. after decryption. Only updated data stored. This is encryption. Mm-hmm.
Okay, this is a sentence. Can you read it? You are able to read it. If anybody else get this message, they will able to understand and they will able to decode your message, or they will able to understand what you are communicating. अगर मैं मैसेज में आपको भेज रहा हूँ ओवर सम एनी चैनल, मोबाइल से, टेक्स्ट से, या वाया email, or by courier, if any third person get this message, they will able to understand what is written inside the message. But I don't. If I want to encrypt my data, encryption means I want to protect my data. So what I will do, I will create a key, let's say AAA. Okay, so I have created this key, and what I will do, I am inserting this key in this text. So, and how I'm inserting, every next letter will have AAA. Every letter is added AAA. Now, can a third person will able to understand what is written in this message? Will they able to understand? किसी को समझ आ रहा है कि क्या लिखा है? अगर मैं एंक्रिप्शन की नहीं दूं, कि मैं नहीं बोलूं कि हर कैरेक्टर के बाद जो ए है उसको रिमूव कर दो, राइट? दिस इज हाउ द एंक्रिप्शन वर्क्स. Correct. इट्स अ स्मॉल, आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ स्मॉल की, ट्रिपल ए. अब किसी को भी अगर आप मैसेज भेजते हो ये, उसको समझ आएगा क्या? No. So where encryption is generally used? In our army, when they are communicating with each other, they send the messages, they send the signals in encrypted format or in encrypted way, and the receiver will also have this key. And how the encryption is done, so they will able to decode the message. Why we are using encryption now? To protect our data. If a third person gets this information, even if the third person gets this information, he or she will not able to decode the information or understand the information. Getting? Now, why for us it is important for encryption? Same thing. You're keeping your data into cloud, you're keeping your data into third-party application, and you want to protect your data. So if any cyber attack happens, if any security bug issue happens, and your data is exposed to the world, or if your data is hacked by some person and they are trying to read it, they should not able to understand what is written inside the data. Agree? That's why we have to encrypt our data and keep it into S3. So even S3 support encryption. How we can do that? We will see that in the lab. Okay, so these are the features which S3 provide us out of the box. MFA delete. So we have seen MFA, multi-factor authentication, where a token is generated to log into the system, as well as if you have some important files. If you have some important file which you don't want to delete, you want to lock it so that it can be avoid accidental delete. So you can enable MFA delete. So if you are deleting that file, you require a extra token, and with extra token only you will able to delete that file. Okay, कोई आपने important document रखा हुआ है और आपको वो delete नहीं करना है, accidentally delete नहीं करवाना है. कभी कभी हो जाता है कि हम लोग सारी फाइल एक साथ select कर दिया, delete कर दिया, important data भी delete हो जाता है. So you will not able to delete that file until you provide a extra token, just like login. That is MFA delete. Secure data using access control and bucket policy. They are another thing. Okay.
Anybody has any question? So we are going to create bucket policy. Bucket policy से भी हम data protect कर सकते हैं. How we can do that? As we are going further, we will see that. इतना किसी को ऐसा थियरी का समझ नहीं आया तो बताइए. Okay. So let's log in into the console and see how we can create a bucket. Okay. How we can create a bucket and what are the things we can do. So I'm in the console. You can go to S3. You can go to S3. Okay. Click on create bucket. Click on create bucket. Here, enter the name. Here, enter the name of your bucket. Now, what the bucket name you can give? You can give any name. But I told you yesterday that the bucket name should be unique across all the account. So let's say I'm trying to create a bucket name Parag. And let's try to create. So you can see it is giving that the bucket name is already exist. Let's check in my account is the bucket name is there with Parag. Can you see any name with Parag? If you want to can search also. Parag Puja is there, but there is no Parag name is there. But it's still saying I can't create a bucket name with Parag. Why? The bucket name should be unique across all the account. Across all the accounts. So you have to give a unique name. Okay. So demo November 2022. Generally, I give some combination of words. Okay. Now you can have to select a region. Now before creating a bucket, let me show you. S3 is a global service now. Again, S3 is a global service. अभी ये हम यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करते हैं इसका मतलब क्या होता है जनरली व्हेन वी आर सिलेक्टिंग एनी मशीन जनरली जब भी आप काम करते हो तो आपको कोई रीजन में काम करना होता है या तो मुंबई रीजन में करो या वर्जीनिया रीजन में करो मैंने बताया था वी आर गोइंग टू वर्क इन अ पर्टिकुलर रीजन ओके वी हैव वर्कड इन आई एम इन अ ग्लोबल सर्विस इट डजंट बिलोंग टू एनी रीजन राइट ऑथेंटिकेशन आपको पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी हो सकता है ओके But in S3 also, it's a global service. S3 is a global service. Global service matlab, it's a generic. It is not region specific. But when we are creating our bucket, we have to specify that in which region our data should be resting. ठीक है अगर मैं मुंबई रीजन सिलेक्ट कर रहा हूँ अगर मैं मुंबई रीजन सिलेक्ट कर रहा हूँ मतलब जो मेरा डेटा होगा कहाँ पे होगा मुंबई डेटा सेंटर्स में मुंबई रीजन के डेटा सेंटर में all the data in this bucket will be stored in Mumbai region data center clear so अगर आपको वर्जीनिया में रखना है so select the bucket in Virginia so आपका सारा डेटा इस बकेट में जितना भी डेटा होगा वो कहाँ पे रहेगा वर्जीनिया रीजन के डेटा सेंटर्स में clear we have to select the region of a bucket when we are creating the bucket and you cannot change it after creating the bucket अगर आपने एक बार बकेट बना दिया उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते सेकंड देयर इज अ pattern in which you have to give the name so the bucket name should be global and unique it should not contain space or upper character ये प्री रिक्वेस्ट है आपको बकेट का नाम देने में now you have to select a region okay ownership let it be default disable the ACL okay
Now public access by default, let it be block all public access. We'll see all this property one by one. Versioning, tagging, default encryption, advanced setting, let it all this property be default as of now. So what we have done, we have selected the bucket name and we have selected the region in which I want to create my bucket. So generally I'm creating a bucket in Mumbai region. Why? Because this region is near to us. We will have a less latency while reading and writing the data into this bucket. लॉजिकली समझ आया मैं बकेट पास में क्यों बना रहे हैं हम लोग? बिकॉज जो बकेट आप बनाओगे आपको एक रीजन सिलेक्ट करना है, उसी रीजन में आपका डेटा स्टोर होगा. इफ यू आर सिलेक्टिंग अ रीजन विच इज फार फ्रॉम यू, तो जब आप अपलोड करोगे तो उतना लेटेंसी आपको बढ़ेगा ना. अगर मैं अमेरिकन डेटा सेंटर्स में अपलोड करूंगा तो उतना लेटेंसी बढ़ेगा ना. Yes. Okay, even if you have a compliance issue that your government is saying that you have to keep your data in India only or in a particular country, then you can select a particular bucket region, create a region bucket and select the region accordingly. And store the data. Create a bucket. So this is a bucket which we have created right now. Right? You can see here region Mumbai. Bucket is an object of not public and the date is shown here. So this is how we create a bucket. Okay. Now before moving ahead, I just want to show you one more thing. For all the region, you can see the name US East, US East, US West, US West, Africa. These are the human friendly names, right? Virginia, Ohio, California, Oregon. But Amazon has a code name for all this region. US East 1, US East 2, US West 1, US West 2. These are the code name for all the region. कोड नेम मतलब ये ह्यूमन फ्रेंडली है, ये कंप्यूटर के लिए. So whenever we are doing coding, whenever we are using CLI or we are using programmatic way, that time we have to use code value of the region. हम वहाँ पे मुंबई नहीं लिख सकते, वहाँ पे हमको AP साउथ वन लिखना पड़ेगा. तो भी हम कोडिंग करते हैं या कमांड से पास करते हैं तो मुझे क्या रखना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है. क्लियर? ठीक है. तो दिस इज द कोड नेम ऑफ ऑल द रीजन. तो यहाँ पे ये ह्यूमन फ्रेंडली नेम है, यहाँ पे प्रोग्रामेटिक वे या कोड नेम है उसका. ठीक है. सो मुंबई में काम कर रहे हैं, सो जस्ट रिमेंबर AP साउथ वन, एपेक साउथ वन एंड वर्जीनिया के लिए US ईस्ट वन. These are the two general popularly used region which we are going to cover in our syllabus. Okay, you don't have to remember the code name for all the region. Generally मुंबई का और वर्जीनिया का याद रख लो, it's enough. Nobody is going to ask you in general, but it's good to know the Virginia and Mumbai. ठीक है. Now coming to your bucket, we have created this bucket. Go to the bucket, click on here. Now you can see this is a bucket. Now you can see property, permission, metrics, all these things is related to bucket. अगर आप यहाँ पे देखोगे किसका पाथ दे रखा है, ऊपर बकेट का नाम. ठीक है. तो हम बकेट की प्रॉपर्टी देखेंगे, अभी परमिशंस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. But before that, let's go and upload some data. Okay, let's go and upload some data.
So you can upload any data. There is a button here, orange button. You can click on the upload, add a file, add a folder. Okay, you can select any file, or you can select multiple file as well, and upload, and just click on upload. You can see the upload is completed successfully, and close it. Your data has been uploaded to S3 successfully, and the files in S3 we call it object. हम क्लाउड में क्या बोलते हैं डेटा को? S3 बकेट में क्या बोलते हैं? Object. Okay, all the files we'll call it object. So इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है. Right? From now onwards, you will see the word object continuously. Okay? So whenever we are saying the word object, that means it's a file in S3. Clear? Now, can I open this file in S3? If I click on the file or click on the object in S3, what will happen? It will open the property of the object. You can see this is the object name, and this is the property of the object. Can we open it? Not directly. By default, all the objects are not open in the browser. You have to download in your local system, and then only you can access that object or file. If your browser supports, then there is an option called open. Otherwise, mostly 99% you have to download the file and then you have to access. Okay, in many company this option is disabled, and the open option just came recently. So for now, forget that there is open. You can open a file in S3. Okay, आप कोई भी फाइल S3 में ओपन नहीं कर सकते, आप नहीं देख सकते. आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्लिक करके डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करके आप देख सकते हो कि वो फाइल में क्या है. ओके, ऐसे. ठीक है. This is how you upload and download the data from S3 bucket. Any question till here? Simple. Even you can drag and drop. Generally what I do, I generally drag the file, open the console, and drag and drop all the files. Generally I have a habit of dragging and dropping the files in S3. It's convenient for me, but you can use upload option. It gives add files and folder as well. Any question here, guys? Just one question Mm-hmm. related to bucket name. Like you mentioned that bucket name should be unique for all the account. Mm. So this is unique for irrespective of the region also, right? Yes. Yes. Okay. Why this is the name should be unique? You will understand in one or more class, one or after class that. Okay. Next. Now, where my data is stored? Where my data is stored? When I created this bucket, or when I'm uploading my data in this bucket, where my data is stored? If somebody asks you, we have created a bucket, so can you specify where my data is stored?
So you can just simply say that the data is stored in the region where the bucket is created. That's a straightforward answer. But inside the region, does region is a data center? The word region specify the data centers? What is the word given for the data centers in general in Amazon? Our first class. Where is the data center located? Availability zone. Availability zone, right? Yeah. Region is just a logical name given to a particular area, geographical area. But where our data is stored in the data centers, and what is the broad name given to data centers in general name? Availability zone. And in each region, we will have one or more availability zone. But Three. one or three or more availability zones. But did we select any availability zone while uploading our data? We just selected the region when creating the bucket. So in which availability zone our data is stored? Ideally, it should be stored in some data center, right? our डेटा जो भी हमने डेटा अपलोड किया कोई ना कोई डेटा सेंटर में स्टोर हुआ होगा ना, मशीन पे स्टोर हुआ होगा ना, किसी ना किसी मशीन पे. ऐसा हवा में तो स्टोर नहीं होने वाला वो. हमने अपना डेटा अपलोड किया तो कोई ना कोई मशीन पे स्टोर होगा. ये एग्री? Yeah. ओके. तो कहाँ पे स्टोर होगा? तो कोई ना कोई अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर होगा. डेटा सेंटर की बात करी तो मैंने, बट कौन से अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर हुआ? हमने तो अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे कोई है ही नहीं. अगर आप कंसोल में देखोगे, ये तो रीजन हमने सिलेक्ट किया. यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट भी ओपन करोगे और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी भी देखोगे, अवेलेबिलिटी जोन का कोई मेंशन नहीं है. सो हाउ योर डेटा इज स्टोर इन अमेज़न? कौन सा अवेलेबिलिटी जोन पे स्टोर है, कौन से डेटा सेंटर पे स्टोर है? सो कमिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ S3. Amazon give a 99.99 time guarantee and availability. How Amazon gives this guarantee? So when you upload your data, Amazon select any one availability zone. ओके. जब भी आप अपना डेटा अपलोड करते हो तो रैंडमली कोई भी अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करता है. अज्यूम करो हर बार आपके लिए अवेलेबिलिटी जोन ए सिलेक्ट की है. So your data is uploaded in this availability zone. The data center in this availability zone. यहाँ पे जो भी डेटा सेंटर होगा उसमें आपका डेटा अपलोड हो जाएगा. And Amazon copies that data to different availability zone. Okay? Amazon आपका डेटा कॉपी करता है. That means you have at least 3 copy of your data. आपके का जो डेटा होता है उसकी एटलीस्ट 3 कॉपीज होती है. दैट मीन्स योर डेटा इज अवेलेबल इन ऑल द अवेलेबिलिटी जोन इन अ गिवन रीजन. एक रीजन में कितने अवेलेबिलिटी जोन होते हैं? 3. तो आपके डेटा का कितना कॉपी होगा? 3 कॉपी. एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. Why 3 data copy? Can anybody Hello, sir. explain? हाँ. Amazon creates clone for every zone. Amazon create a copy of your data in all availability zone. Yes. When we have upload single zone, then another copied it. Okay. So we are not selecting the zone, स्वप्निल. Yes, sir. हम कोई भी जोन सेलेक्ट नहीं कर रहे. हमने जब डेटा अपलोड किया कोई ऑप्शन नहीं आता है तो Amazon रैंडमली कोई भी एक अवेलेबिलिटी जोन हमको सिलेक्ट कर देता है. अज्यूम करो कि आपको हमेशा आप इसके पास हो, इस अवेलेबिलिटी जोन के पास हो, आपका घर यहाँ पे है.
So your data is uploaded in this availability zone, and after uploading the file in this availability zone, Amazon automatically replicates your data or copies your data in other availability zone for backup, for security. अब क्यों वो 3 availability zone में रखता है? Why 3 availability zone? Anybody can guess? Uh, Whenever we can access anywhere in the region. ओके, अगर एक availability zone में फिर भी एक्सेस कर सकते हो ना, वो तो Uh, ग्लोबली कहीं से भी कर सकते हो फिर तो, क्योंकि क्लाउड में रख दिया है. yes, sir. If data lost in any availability zone, then other availability zone there will be this data. We can use Exactly. It's a as a backup. security. अगर आपका ये availability zone डाउन चला गया, if you lose this availability zone, मतलब ये availability zone में डाउन गया, मतलब कनेक्टिविटी इशू आया, हमने बात करी थी, क्या हो सकता है, क्लाइमेट इशू आ सकता है, नेचुरल डिजास्टर आ सकता है. That's why I told you all 3 availability zones are connected with each other. Remember? मैंने कहा था आपको, मैं बाद में बताऊंगा क्यों all 3 availability zones are connected to each other. They are the backup of each other. सर उसमें डेटा सिक्योरिटी का भी रीजन आ सकता है क्या? हाँ. So one of the basic why Amazon keeps 3 copy is because the availability of the data. कि अगर आपका ये डेटा सेंटर उड़ गया, और उड़ गया मतलब देखो कभी बंद तो नहीं होगा, और कनेक्टिविटी लॉस हो गया, यहाँ पे आप हो, अगर आपने सिर्फ आपका डेटा यहीं पे पड़ा है सिर्फ, और बाय चांस ये अवल्टी जोन की कनेक्टिविटी आप क्रैश हो गई, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या इसमें पावर डाउन हो गया, कुछ भी हुआ, विल Amazon गिव यू एक्सक्यूज दैट कि इस एरिया में पावर फेलियर है या इस एरिया में नेटवर्क डाउन है? कैन No, Amazon sir. गिव द एक्सक्यूज टू द बिग कंपनीज? No, sir. सो फॉर दैट पर्पस अगर यहाँ पे कनेक्शन नहीं हो रहा, सो इट विल रीड आउट योर रिक्वेस्ट टू अदर अवेलेबिलिटी जोन, और यहाँ से आपको डेटा दे देगा. वो इंटरनल करता है, हमको पता भी नहीं चलेगा. How Yes, sir. the data is kept in Amazon. So always remember you have at least 3 copy of your data. Okay, and because of availability as well as durability, अगर आपका डेटा करप्ट हो गया, अगर ये फाइल करप्ट हो गई, चांसेस है ना, सिस्टम ही है, मशीन है, Yes. तो ये फाइल करप्ट हो गई, तो अगेन यू हैव 2 copies अवेलेबल. ओके. सेकंड, अवेलेबिलिटी जोन अप है, बट वो जो रैक है, जो ये रैक था, ये क्रैश हो गया. ओके, तो भी आपका डेटा उड़ सकता है. सो Amazon always try to maintain 3 copy of your data at least. Anybody has any question? That's why I told you all the availability zones have a very high internet speed. They are connected with very high ultra low speed. जो हमने पढ़ा था ना ये point. Why all 3 availability zones are connected with each other? समझ आया? अब आप बोलोगे सर जब Amazon में पैसा लेगा, वो सिंगल डेटा का लेगा या 3 कॉपीज का लेगा? व्हाट डू यू से? वो सिंगल कॉपी का लेगा या मल्टीपल कॉपीज का लेगा पैसा? Single. सो द आंसर इज यस, द सिंगल. वो Amazon का फीचर है कि वो 3 जगह रखता है. हमें फर्क नहीं पड़ता वो 3 जगह रखे या 6 जगह रखे, हमें अपने डेटा से मतलब है. मैंने एक फाइल अपलोड करी है, मैं एक का ही पैसा दूंगा, ठीक है. बट फॉर बैकअप पर्पस, फॉर सिक्योरिटी पर्पस, फॉर रिडंडेंसी पर्पस, Amazon keeps 3 copy of your data, at least 3 copy, again at least. Clear? सर Yes. आपने एक फाइल ऑफ कॉपी सेव कर रखी है और उसकी 2 जगह पे कॉपी हो गई अवेलेबिलिटी जोन में, डिफरेंट अवेलेबिलिटी, एंड इफ यू डिलीटेड दैट फाइल then it will deleted from the other from availability हाँ, zone to हाँ, वो ऑटोमेटिकली हर जगह से डिलीट कर देगा. इसको बोलते अच्छा सिंक अप, हमेशा सिंक रहेगा डेटा. जो भी डेटा यहाँ पे रखा वो बाकी ऑल्टर्न से सिंक हो जाएगा.
अगर आपने यहाँ से डिलीट कर दिया तो बाकी जगह से भी डिलीट हो जाएगा। ओके, दैट इज मेंटेन बाय अमेजोन। हमको कुछ उसकी का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ओके, पहले हमको ये सब चीजें खुद करनी पड़ती थी। जब हमारा ऑन प्रीमाइस होता था, वी हैव हमारा यहाँ पे प्राइमरी सर्वर होता था, यहाँ पे एक हमको बैकअप सर्वर बनाना पड़ता था, एंड वी हैव टू सिंक दैट थिंग बैकअप। ठीक है, वी विल टॉक दिस मोर कि बैकअप सर्वर क्या होता है, एक्टिव स्टैंड बाय क्या होता है। बट पहले ये सब ऑन प्रीमाइस में जब होता था, ये सब हमको खुद करना पड़ता था। अभी अमेज़न बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स देता है, हमें टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? यस? नो? यस सर, बट अभी ऑन प्रीमाइसेस यूज नहीं होता क्या? मैंने बोला ना, कंपनियां यूज करती तो है। ऑन प्रीमाइस में कौन सी कंपनी यूज करेगी? बैंकिंग, जो क्लाउड पे माइग्रेट नहीं हुई है। सारी कंपनी क्लाउड पे है क्या? सारी कंपनी नहीं। क्लाउड पे नहीं है। फेसबुक है, गूगल के खुद के सर्वर्स है, मैनी कंपनीज हैव स्टिल देयर ओन सर्वर्स। ओरेकल है, IBM है, देयर आर मैनी कंपनीज व्हिच स्टिल हैव देयर ओन सर्वर्स। ये बैंकिंग क्लाइंट, बैंक्स के पास खुद के सर्वर, आज भी खुद के सर्वर्स है। Okay, they are not completely migrated to cloud, they are partially migrated to cloud. Okay, so ऑन प्रीमाइस काम कर रहे हो, अगर आपकी कंपनी क्लाउड पे नहीं है तो ये सब चीज आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ये सारे फीचर्स आपको खुद स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी सब कुछ का। ठीक है, चलो। यस। ठीक है, नाउ डेटा कंसिस्टेंसी पे आते हैं हम। ये टॉपिक में आपको समझाता हूँ डेटा कंसिस्टेंसी क्या होता है। बिफोर दैट लेट्स कवर अ लिटिल। ओके, S3, some property of S3. Okay, so what is S3? Is the key value pair. S3 is the object storage. What is key? It's a simple name of the file or object. Value is a simple data. Okay, S3 को key value भी बोलते हैं। की क्या होता है? उसका नाम, और वैल्यू क्या होता है? उसका डेटा। देयर इज अ वर्जन आईडी। वर्जन आईडी मतलब मैंने बताया हम हर फाइल्स का वर्जन बना सकते हैं। सो देयर इज अ वर्जन आईडी इन S3. Okay, and we can create a metadata. What is metadata? Anybody knows what is metadata? Data about data. Okay, what is meaning of that? तो वहाँ पे लिखा भी है मैंने। What is mean by that? In layman terms. More information about data. Okay, right. Let's go to the any object or any file in our system and go to the property. If you go to the details, फाइल के अंदर तो डिटेल है ही है, फाइल के अंदर PPTs बनी हुई है, बट ये फाइल किसने बनाई है? इस फाइल का सब्जेक्ट क्या था? ओके, हु इज द ऑथर? ये फाइल कब बनाई है? ओके, इस फाइल में कितने वर्ड्स है, कितने पैराग्राफ, कितने स्लाइड्स? कैन यू सी द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? ये कोई भी ऐसा बता रहा है कि वो पीपीटी में क्या लिखा है? नहीं, पीपीटी के बारे में कुछ बता रहा है, राइट? ये कितने साइज की है, ठीक है, कब क्रिएट हुई थी, कब एक्सेस हुई थी, किसका परमिशन है? दिस आर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेटा। एग्री? अगर आप कोई सी भी फाइल खोल के देखोगे उसके बारे में कुछ ना कुछ डिटेल लिखी होगी ना। Yes, sir. दिस इज कॉल्ड मेटा डेटा। ओके, मेटा डेटा या माटा डेटा, जो भी बोलो, जनरली इस मेटा डेटा। मेटा डेटा मीन्स इट्स अ इंफॉर्मेशन अबाउट योर डेटा, राइट? जो बुक्स है, आप बुक्स परचेज करते हो, बुक्स के अंदर कंसेप्ट लिखा है, और वो बुक्स किसकी है, ठीक है, किस ऑथर ने लिखी है? आर डी शर्मा है, आर डी शर्मा के बारे में लिखा होता है। बुक में क्या होता है? इट्स अ क्लास 8 स्टैंडर्ड बुक। ओके, मैथ्स की बुक है, कंसेप्ट क्या लिखे है, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन लिखी रहती है ना, इट्स अ मेटा डेटा। ओके, सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेटा। जो भी हमारे पास डेटा होता है
उसका जो मेटा डेटा रहता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट and that you have to save. If you are saving in your system, does S3 support that also? So answer is yes. If you go to any object and if you scroll down, you can see the metadata is also copied. Some information about the metadata is also copied, and you can add more thing. Okay, now and there are bucket policies, there are access policies, cross resource sharing, and transfer escalation. These all things we are going to learn in detail. So these are the basic features which Amazon S3 provide when you upload your files. Okay, let's go to lab. Let's see the property of the bucket, few properties of the bucket, and few property of the object. Before that, anybody has any question in the PPT or any words which you are not able to understand? I'm going a little slow. I'm not rushing it. But if you are not able to understand any word, any information, please let me know. Sir, will you explain MFA delete? MFA delete. What do you mean by MFA? Multi-factor authentication. Okay, where we are using it? Generally, we are using it to log in, right? Correct. It gives an extra OTP type of concept thing, or you have to provide a token to the computer to log in into the system apart from username and password, right? So Yeah. if right now, if I go to console, this is a file, this is the object, I can delete it easily, right? Just say yes, like you have to enter permanent delete word here, and you can delete the object. It is deleted, you can see, right? But let's say this is your important document, this is your important file, and some time happen that you select all the files together and you just delete. This happens many times, or accidentally you delete all the files. You're doing some work, you wanted to delete it in another folder, but you deleted the important folder. आपको दूसरा folder delete करना था, but आपने important file delete कर दी. What will you do? It will create a problem for your company. It will create a problem for you. So what you can do? You can lock that file. You can lock that file, and you can only delete that file after providing a token. मतलब कि आपने फाइल तो डिलीट कर रहे हो, पर ये फाइल को जब डिलीट करोगे तो वो कंफर्मेशन मांगेगा, उसके बाद टोकन भी मांगेगा. एंड व्हाई एमएफए? सो ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन डिलीट दैट फाइल, जिसके पास टोकन है. नॉट ऑल पीपल कैन डिलीट द फाइल. सो आपके एडमिन ने लॉक कर दिया कोई फाइल, तो सिर्फ एडमिन डिलीट कर सकता है उसको, क्योंकि उनके पास टोकन है. ओके, सर यूजर लॉक कर सकता है क्या? कर सकते हो आप, अगर आपके पास पर एमएफए, फिर आपको अनेबल करना पड़ेगा अपने अकाउंट पे, अपने यूजर पे. ओके, हाउ यू कैन डू अनेबल द एमएफए? आपके जब आप आईएम में जाते हैं, वहां पे ऑप्शन होता है अनेबल एमएफए. रूट अकाउंट पे तो वो बोलता ही है मैंडेटरी. देखिए, ऐड एन एमएफए, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो. ओके, दिस इज योर एक्टिवेटिंग योर एमएफए. तो ये रूट अकाउंट पे एमएफए एक्टिवेट करने को बोल रहा है. वो कह रहा है कि वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, स्कैन द क्यूआर कोड एंड एक्टिवेट. दिस इज फॉर रूट अकाउंट, बट फॉर यूजर्स ऑल्सो वी कैन डू द एमएफए. वहां पे भी ऑप्शन है यूजर्स के लिए, आप एमएफए अनेबल कर सकते हो. तो जब तक आपका अकाउंट में एमएफए नहीं होगा, मतलब जो यूजर है उसमें एमएफए नहीं होगा, तो आप इस पे एमएफए अनेबल कैसे करोगे? ओके, दिस हियर इज ऑब्जेक्ट लॉक. यू कैन सी that feature is available. So basically it is used to protect your data. Okay, object lock. It is used to protect your data for accidentally deleting it.
Even you can disable the delete option from IAM. आप पॉलिसी भी बना सकते हो कि कोई भी डिलीट नहीं कर सकता फाइल्स को. There are multiple ways, but MFA delete is basically avoid accidental delete, and if you want to delete, you have to enter token, extra token. Okay. Got it? Yes, sir. Okay. Okay. Now, let's go and see the property of the bucket. So, if you click on the bucket, you can see the property of the bucket. This is a list of the object in the bucket. Okay. You can see the property of the bucket. You can see when it is created, which region it is. Okay. Bucket version. Version is enabled or not. Right now, there is no version is enabled. You can give the tags to your bucket. Okay, tags mean again who has created the bucket, when the bucket was created, by what method, which this bucket belongs to which team, which company, XYZ. Tags can be anything. It's extra information again, representing something about your bucket. Agree? Encryption. Right now we are not enabling the encryption. These are tire. This is interlink tire. This is you enable the server loggers. These are the few features or property of your bucket. This is not required. This is not required right now. In notification, we'll see. Okay, these are all the features or property of your bucket. So from here, I can change the property of my bucket. So you can change the permissions from here. All these things one by one we are going to learn. Matrices. Matrices gives the information about your data. How much data you have kept, total size of the bucket, number of object. Okay, I will show you another bucket. So this is my bucket. If you go to matrices, you can see I have stored 55 GB or 52 GB of the data. Okay, number of object, number of files in my bucket. These are the few matrices it has given. Okay, so we have created a bucket. You can check the bucket property. Just explore these things. So we will get comfortable with S3. Check what are the things are there. Okay, this is a name. This is a ARN. This is a create time. What is ARN? I will explain you in detail. Okay, it's a Amazon resource name. So anything you create in Amazon has a unique name. Okay, Amazon resource name. You create an IAM policy, you create a user, you create a role, you create a bucket. Everything has a unique name. It is called ARN. It has a predefined method nomenclature. You'll see that. Okay, coming to object. If you click on any object, it will open the object property now. You are inside the object. You can see it's a object property. You can see object overview. Same thing. Owner of the bucket, owner of the object, where the object is stored, when the object was created, size, type. These are the some keys. We'll talk about the key URLs. This is the bucket policy property. Okay, every object is inside a bucket. You know that your files in general, whenever you create a file, some of the file take the property of your drive.
हमारा जो ड्राइव होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टी सेट की करी अगर आपने, जो सी ड्राइव है या डी ड्राइव है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेट करी है, अगर उसके अंदर आप कोई फाइल बनाते हो तो वो क्या होता है, वो ड्राइव की प्रॉपर्टी ले लेता है कुछ फाइल्स। यस और नो? राइट, Yes. दैट इज अ ड्राइव Right. प्रॉपर्टी। अगेन सेम थिंग हैपन्स इन AWS S3। ओके, जो आपने बकेट में कुछ प्रॉपर्टी सेट करी है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में भी रिफ्लेक्ट होता है, एंड यू कैन चेंज द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ओके, सो कुछ चीजें वो बकेट से लेता है, इनहेरिट करता है, खुद उसकी भी प्रॉपर्टीज रहती है। ओके, so these are the property of your object. Tags, server-side encryption, storage class, we will learn it, going to learn it tomorrow. Storage class encryption is disabled. Tags, you can enable the object level tag. Each file you can give a tag. Who has created this object, object log, so on. Permission, who can access this file. Okay, we can control this from permissions. Versions, how many version of the file is right now? There is no version because no version is enabled on bucket. So we are going to learn step by step everything. There is two type of property. One is bucket property and another is object property. So generally objects inherit the bucket property. जो भी आपने bucket की property रखी है वो object वहां से जब भी आप अपलोड करते हो तो वो bucket की property को inherit करता है, मतलब वहां से copy करता है। And इवन यू कैन हैव इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, आप वहां से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज भी कर सकते हो। सो यू कैन सी हमारे जो भी फाइल्स पड़ी है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है। दिस इज योर फाइल प्रॉपर्टी, बट कुछ चीजें आपको बकेट्स, इसका जो सी ड्राइव है, जो ड्राइव में अपलोड किया वहां से भी मिलती है। एनी क्वेश्चन टिल हियर? तो चीज समझ नहीं आ रहा हूँ तो मुझे बताइए। Got it? Yes, no? समझ आया guys? Yes, sir. सो आई एम नॉट टेकिंग मोर इन S3। मैं आपको बिलिंग अलार्म कैसे सेट करते हैं वो बता देता हूँ। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके वापस से स्टार्ट करता हूँ।